Hello, dear aspirants. Welcome to Guidely. This is the session for those who are going for SBI GD exam, and now it is approaching really soon. So let's know the most expected topics for SBI PO group discussion this year's round. So let's go for the topic straight without wasting any minute. So I wish you all the best that you have actually made your way till here because it's a proud moment. You can feel proud of all your hard work that you have made during your journey, and now this is time just actually now I would say last steps of ladder are just there, and you need to climb and then you need to get your destination. I wish you all the best and congratulations once again. So here we have put the topics into some categories. Okay, so we'll be talking about the categories. I'll also let you know that what you should know about the categories, as well as we will be talking about the against argument. Okay, so here in this session these are not just topics but also the idea how to go, how to make your flow when you get this kind of topics, right? Okay, so first one I have is privatization of public sector banks, that is PSBS, right? So what it means, the government selling its majority stake over 50% in PSU banks to private companies or investors. If you get a topic that you don't have much idea about, please take a pause. Do not try to you know don't think that you need to hurry up, you need to speak, you have to be the first one. Or in this case, if you are not pressurized to speak like at the first one, or you are not uh, just supposed to talk first, then this is the best case that you should listen to some people first and then you should speak. All right, but yeah, अगर like ये वाली condition है कि इसी को ही सबसे पहले बोलना है, in that case again take a pause and try to bring some ideas together, then make some practice and then go. This practice means some seconds you need, right? So privatization of public sector bank, आपको सोचना पड़ेगा कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, कि मेजॉरिटी ऑफ स्टेक्स जो हैं वो किसको दिए जाएंगे, वो प्राइवेट कंपनीज या इन्वेस्टर्स को मिल जाएंगे. सो इन्वेस्टर्स आर कमिंग, दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट एंड they are going to take the profit as well, right? What you should know, this is not about shutting down banks, it is about changing the ownership. Now it is owned by this, but then it will be owned by the investors or by the private companies. If you want to talk about the positive sides, then what kind of things can be brought out there? Efficiency. So private banks are generally seen as more efficient, profitable, and quicker at decision making. Competition, it would force all banks to compete, leading to better customer service and technology. There will be reduced fiscal burden, means the government would not have to use taxpayers money recapitalization to save failing public banks. And then professional managements, as you can see, that frees bank from political interference. See, when you see the government, you can directly see the like politics, like the kind of that system related to politics. All right, if you are taking any point that is talking about anything against this thing, then first is social banking. Private banks may close branches in rural or unprofitable areas because for them the profit will be their majority. So they will be doing things related to profit. So they are going to close the branches, those they are going to close the branches that is not able to generate the profit. Job security, definitely, like I would say, one of the most important things. So leads to fears of job losses or changes in service conditions for current bank employees. Then we have affordability. Private banks might focus on high profit customers, making basic banking services expensive for poor.
And then we have financial stability. PSBs acted as a buffer during the 2008 global financial crisis. अगर सब प्राइवेट हो गया तो इस चीज का रिस्क बढ़ जाएगा. So this is how you need to bring some point, you need to jot down, and then when you speak you can use your points and you can make the sentences and present your argument, right? Okay, if I have a topic central bank digital currency CBDC or e-rupee, what kind of ideas I should bring in my mind? सबसे पहला काम जो जीडी का है वो यही है कि टॉपिक के बारे में आइडियाज तो हैं, उन्हें कलेक्ट करना कि उस टाइम पे उन्हें बोल सको आप, राइट? तो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं. इट इज अ डिजिटल वर्जन ऑफ द फिजिकल रुपी issued and regulated by the RBI. It is sovereign currency in digital uh, form, right? आपको क्या क्या जानना चाहिए? हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम यूपीआई. यहाँ ये गलती नहीं करना बिकॉज इसमें डिजिटल आ गया तो दिस इज यूपीआई, दिस इज व्हाट वी यूज एवरी डे, राइट? और हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी. वन मोर वी इज क्रिप्टो करेंसी. सो यूपीआई पेमेंट सिस्टम है जो क्या करता है, जो मूव करता है मनी को एक जगह से दूसरी जगह पे. व्हेन यू पे at a restaurant, when you pay to a vegetable vendor or to an auto rickshaw, you are transferring your money to their accounts, right? जो आपका CBDC है is the money itself, just like a digital bank note in your wallet. It is a kind of money which is just digital money, right? ये डिफरेंट कैसे क्रिप्टो करेंसी से? क्रिप्टो लाइक बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज है, आप सबको पता है. गवर्नमेंट इसको सपोर्ट नहीं करती है एंड हैज अ वोलेटाइल वैल्यू. CBDC is centralized, backed 100% by the RBI and has the exact same value as the physical rupee. Like अगर एक ई रुपी है तो वो एक रुपये के बराबर होगा. अच्छा, पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या क्या है? फास्टर है, चीपर है, लाइक बॉर्डर पेमेंट्स, ब्ला ब्ला. पोटेंशियल चैलेंजेस क्या क्या हैं? तो भाई पोटेंशियल चैलेंजेस में आएगा डेटा प्रिवेसी, transactions could be tracked, cybersecurity risk, and the cost of implementation. Third one we have is fintech companies versus traditional banks. क्या मतलब है fintech का? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी. fintech बना है फिन मतलब फाइनेंशियल प्लस टेक मतलब टेक्नोलॉजी से. तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी रेफर्स टू कंपनीज लाइक पेटीएम, फोन पे, रेजर पे, जीरोदा, जो टेक्नोलॉजी का यूज करती हैं फाइनेंशियल सर्विसेज को ऑफर करने में. तो इसमें कोर डिबेट क्या है? दैट इज इट कॉम्पिटिशन और कोलैबोरेशन? ये है इसका मेन कोर पॉइंट. द कॉम्पिटिशन व्यू अगर यहाँ पर आप लोग देखते हो तो फिनटेक्स क्या होती हैं? आर डिसरप्टिंग बैंक्स बाय ऑफरिंग बेटर, फास्टर एंड चीपर सर्विसेज इन स्पेसिफिक एरियाज लाइक पेमेंट, जैसे कि यूपीआई हो गया, या फिर आप देखो लेंडिंग है, डिजिटल लोन लेना हो गया, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक एप्लीकेशन हो गई. कोलैबोरेशन में अगर आओगे तो बेसिकली करंट ट्रेंड की बात करोगे. बैंक्स हैव ट्रस्ट, a large customer base, and regulatory licenses. Fintech have agility and superior technology. The future is partnership. Okay, you all know that there is a batch for you, and this is the batch of experts. Like Mr. Aditya sir is there, and यहाँ पे हमारे पास में है सांबर सिवन सर हैं, के राय सर हैं, अरविंद कपूर सर हैं, रविंद्र पाल सर हैं. All these people are super senior, super educated, experienced. If you see, so sorry, they all have experience in your industry, that is banking industry. सर was ex chief manager, सर थे DGM, और सर भी थे DGM, और सर है expert panel member who has served bank, right? So everything you are going to get in this batch in just 1999. You need to use this code 1999. हाँ, मैंने एक और 9 तो नहीं लगाया ना. Okay, you are getting 2 online mock interviews with the panel, 1 online group discussion, you are getting 1 online GE session, you are getting 15 plus recorded classes by Aditya sir for SBI PO. Isn't it so good? It is very good. Let's come to the topic again. Key terms हैं BaaS, banking as a service, and open banking. I am giving you the clues how you talk about a topic. Just try to keep your perspective broader. छोटा सा सोचोगे छोटी सी बात बोल पाओगे, थोड़ा सा वाइडर सोचोगे, बड़ा सोचोगे तो अच्छी बात बोल पाओगे, विद एग्जाम्पल बोल पाओगे, एविडेंस दोगे तो आपकी बात बहुत ठोस लगेगी. फार्म लोन वेवर्स, गुड और बैड, क्या मतलब है?
गवर्नमेंट पॉलिसी जो कैंसिल करती है आउटस्टैंडिंग लोन्स ऑफ फार्मर्स। अगर कोई किसान है जिन्होंने 10 लाख का लोन लिया है अपनी खेती बाड़ी को अच्छा करने के लिए, बट फसल बर्बाद हो गई, कुछ खराब हो गया, और उनका सारा का सारा लोन अगर सरकार माफ कर दे तो कितना अच्छा है, राइट? क्या है इसके बारे में जो आप बोलेंगे? सोशल और पॉलिटिकल लेवल पे आप बोल सकते हैं कितना रिलीफ होता है फार्मर्स को, कितना ज्यादा बढ़ावा मिलता है एग्रीकल्चर क्षेत्र को। अगेंस्ट ये बोलेंगे भाई बैंक्स को फर्क पड़ता है। सपोज अगर पूरे कंट्री का मिला के अगर ये लोन 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़ का है, तो सोचो कितने बड़े लेवल पे इसमें बैंक्स को इम्पैक्ट पड़ेगा कि वो पैसा जो उन्होंने दिया था वो उनका चला जाएगा, तो वो पैसा उनसे खो गया, मतलब चला गया उनके पास से। एंड टेम्परेरी सॉल्यूशन है ये, इट इज नॉट अ क्योर, इट इज जस्ट अ बैंड एड। अगर हमारे पास टॉपिक आ जाए राइजिंग एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का बढ़ना। नॉन परफॉर्मिंग एसेट एक प्रकार का लोन है जहां पर जो बोरोवर है उसने इंटरेस्ट पे नहीं किया है या 90 दिनों तक उसने प्रिंसिपल पे नहीं किया, एंड इट इज अ बैड मनी फॉर द बैंक। आपको क्या जानना है? आपको उसका करंट स्टेटस जानना है, फॉर दैट डेटा इज important. The good news is that gross NPAs have actually decreased significantly in recent years from a peak of over 11% to around 2.7 by mid 2024. This is due to government and RBI efforts. इसके बाद आपको जानने पड़ेंगे इसके सॉल्यूशंस, कीवर्ड्स जो आप यूज कर सकते हैं। इंसॉल्वेंसी मतलब बैंक्रप्सी, कोड आईबीसी, एंड बैड बैंक NARCL, एंड ईज रिफॉर्म। ये कुछ टर्म्स हैं, एंड एज अ बैंकर यू आर अबाउट टू बी अ बैंकर, you all know about these terms really well. So I expect that अगर आप इन पॉइंट्स को अगर आप लिखोगे और आप इन पॉइंट्स पे इलेबोरेट करके डेटा डाल के अगर आप बोलोगे तो बहुत इजी होगा आपको इस बारे में बोलना, राइट? चलो लेट्स मूव अहेड। इफ वी हैव अ टॉपिक लाइक फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया, व्हाट इट मींस, इसका मतलब है कि फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक अ बैंक अकाउंट, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन हर सेगमेंट में मिलना चाहिए, हर सोसाइटी के हर सेगमेंट में, खासकर उन्हें जिन्हें सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है, दैट मीन्स रूरल एरियाज में। कि स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री जन धन योजना, ऐसे कोई भी फ्लैगशिप इवेंट्स, ऐसे कोई बड़ी फ्लैगशिप स्कीम्स जो बिल्कुल लाइक रेवोल्यूशन टाइप ला दे, है ना? जीरो बैलेंस पे अकाउंट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। एंड देन यू कैन टॉक अबाउट द सक्सेस ऑफ इट्स। challenges की बात करेंगे आप, द फोकस हैज शिफ्टेड फ्रॉम एक्सेस टू यूसेज एंड क्वालिटी। मैनी जनधन अकाउंट्स आर डोरमेंट, उन्हें कभी भी यूज नहीं किया गया है। आप खुद सोचो अगर आपका खुला था या किसी का आपके आसपास, आर दे यूजिंग दिस अकाउंट? एंड देन द की डेटा इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। What if you get the topics like merger? बैंक्स के मर्जर की बात अगर आप करेंगे, आपको पता है मर्जर करना क्या होता है? मिलाना, मतलब मर्ज कर देना होता है, मिक्स कर देना। दो बॉडीज थी, आपने उनको मिक्स करके एक बॉडी बना दिया। आपको क्या क्या जानना चाहिए? आपको जानना चाहिए why they did it, तो इसके रीजंस, मतलब आपको इसके प्रोज सोचने हैं। ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एक माहौल बनेगा, you can improve efficiency and it can reduce the cost of operations, like जब आप मर्ज करते हैं तो obviously if you had 20 people but now you have merged it, now only 10 people can do this work. बैंक की एबिलिटी बढ़ती है because you have now big infrastructure, you have now big projects. Challenges are first of all HR integration. This is the biggest issue. Merging employees from different banks with different work cultures, seniority, promotion policies create stress and dissatisfaction. Technology integration, definitely they were using a different technology, but now they have a different software and the working system, it will be difficult to adapt. And then the customer disruption, earlier the customer was knowing all the terms of ABC Bank, but now it has moved to XYZ Bank. So definitely there will be some problems like account number, IFSC code, blah blah. So these are the challenges that you can talk about in the discussion. Category number 2, if you have technology or digital impact like AI, job creator or job destroyer, a very good topic. किस तरीके की बात कर सकते हैं इस पे? The destroyer argument, the best one that you can pick any day. ऑटोमेशन है, सारे रूटीन वर्क जो हैं खत्म हो जाएंगे। कॉग्निटिव टास्क्स इन बैंकिंग, डेटा एंट्री, कस्टमर सर्विस एंड लोन प्रोसेसिंग, job can easily be destroyed. The creator argument, AI will not replace humans but augment them
It will create new high skilled jobs that don't exist yet, such as AI ethics officers, data scientists, and AI trainers. The key concept reskilling and upskilling. अगर आपने नया काम नहीं सीखा तो AI सीख के उस काम को कर देगा. डेटा प्रिवेसी वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी क्या मतलब होता है? कॉन्फ्लिक्ट है एक इंडिविजुअल के राइट को पर्सनल डेटा को प्राइवेट रखना एंड गवर्नमेंट की जरूरत के हिसाब से डेटा को एक्सेस करना और कंट्री को प्रोटेक्ट करना. डेटा प्रिवेसी साइड की अगर आप बात करें तो आप बोलेंगे कि भाई पर्सनल डेटा है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, पर्सनल चैट्स हैं, लोकेशंस है, दे शुड नेवर बी seen by anyone. This is a fundamental right. Without privacy, what is the point of having such things like password and all, right? But if you talk about the national security, then what if someone is chatting about, planning an explosion or planning a big threat because we can't read anything, we can't see the location, then that person can be really dangerous and we don't know the level, right? And let's talk about the key law in India, the Digital Personal Data Protection DPDP Act 2023. This is India's new data privacy law. A key point of debate is that it gives the central government broad exemptions, allowing it to access a citizen data in the name of national security. These are the beautiful points that you can talk about. Let's talk about a very famous one, the gig economy. क्या मतलब होता है? एक labor market characterized by temporary flexible jobs where companies hire independent workers, contractors, freelancers instead of full-time employees like Uber drivers, Zomato delivery partners, Blinkit partners, etc. किस बारे में बोलोगे? फ्लेक्सिबिलिटी है, मैं जब चाहे तब काम कर सकता हूँ, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ, जितना चाहे उतना कमा सकता हूँ, जितना वो जॉब पर्टिकुलर देती है, राइट? देन यू कैन टॉक अबाउट द लो कॉस्ट फॉर कंपनी, बिकॉज उसके लिए उन्हें पहले एक फुल टाइम एम्प्लॉय रखना पड़ रहा था, बट नाउ एक लाइक फुल टाइम एम्प्लॉय को ना रख के भी काम चल रहा है, तो उनकी भी जो कॉस्ट है वो बच जा रही है, राइट? कॉन्स में क्या बोलोगे? नो सोशल सिक्योरिटी, लो पे एंड पुअर कंडीशंस एंड करंट इश्यूज. सी, जब भी आप सोच रहे हो बड़े लेवल पे सोचना है, ठीक है? पहली बात सोशल सिक्योरिटी नहीं है, दूसरी बात में है पैसा भी कम है, कंडीशंस भी पुअर है, और करंट इश्यू जो चल रहा है उसके हिसाब से आप बोल सकते हो. सो सी, अगर पॉइंट्स हैं तो जनरेट करना इजी है, सोचना जरूरी है. पॉइंट्स नहीं है तो आइडिया ही नहीं है तो उस पर बोला क्या जाएगा? डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया क्या मतलब है? द मैसिव ग्रोथ ऑफ नॉन कैश ट्रांजैक्शंस इन इंडिया. Key driver UPI. It has been the biggest revolutionary force, allowing instant free mobile to mobile payment. Benefits है, convenient कितना ज़्यादा है, formalization of economy है, and it is very transparent. Challenges हैं, digital divide, the difference between urban and rural conditions, cyber security, and merchant reluctance. मतलब कुछ छोटे छोटे जो मर्चेंट्स हैं वो आज भी कैश प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से वो टैक्स की भी चोरी करते हैं, right? I hope the topics and the details on these topics are definitely helping you to get the ideas about these very important topics, because they are super important. Let's move ahead. Category number 3, social and general issues. Work from home versus work from office. सबको पता है क्या डिफरेंस है? कोविड के बाद में दिस सिचुएशन अरोज. Pros are for employees are super comfortable. You can work from your home at your like comfort level, no commute, healthy food, blah blah. कंपनीज के लिए पैसे बचते हैं, इससे सबसे बड़ी बात तो ये है. एंड इसके प्रोज क्या हैं कंपनीज के लिए? दैट दे कैन नॉट कम्युनिकेट, दे कैन नॉट मेंटेन द कल्चर, एंड दे कैन नॉट सुपरवाइज, ब्ला ब्ला. एम्प्लॉयज़ के लिए क्या है कि काफ़ी बार सेपरेशन हो जाता है, और काफ़ी बार घर की चीज़ों में उलझे रहते हैं तो काम में मन नहीं लगता, और काफ़ी बार विजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है प्रमोशंस के लिए. The likely future, a hybrid mode which combines 2 to 3 days in the office with 2 to 3 days at home, seems to be the most balanced situation or solution. Climate change and green energy. How can we leave this topic? क्या मतलब है? सबको पता है ग्लोबल चैलेंजेस हैं, क्लाइमेट बैंकिंग, क्लाइमेट
बैंकिंग ने क्लाइमेट चेंज के एंड इंडिया का जो एफर्ट है फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जाना, ये खत्म हो जाएंगे और इनको आप फिर से बना सकते हैं। दिस इज द बिगेस्ट थिंग। आपको क्या जानना है, इंडिया का गोल क्या है? अक्टीर की टारगेट इज टू अचीव 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030, ये टारगेट है। एंड रीच नेट जीरो एमिशन बाय 2070। मैं जिंदा रहूंगी तब तक? कांट से, आप लोग तो रहोगे। चलो, the banking angle important is green financing. This is the role of banks in this transition. Banks are being encouraged to provide loans for green projects like solar, electric vehicle manufacturing. Avoid lending to polluting industries like बंद कर दो उनको लोन देना. This is the part of a larger trend called ESG, environmental, social and governance investing. ओके, सोशल मीडिया की भी बात कर लेते हैं, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कनेक्टिंग और डिविजन, मोस्टली यू कैन टॉक अबाउट दीज टू थिंग्स। कनेक्टिंग, डेफिनेटली you can connect with people, you don't have to be isolated because you have people on your social media, so you can talk to them, you can learn about their cultures, you can learn, you can get a new skill on social media. But there are some cons as well. Sometimes the things are out of hand. Social bullying is definitely there. Sometimes privacy is also a biggest like matter, and there are many things you can talk about. These are the main thing. If you are taking the connecting argument, these are the points you can talk about. If you are taking the division argument, then echo chambers and filter bubbles, misinformation, fake news, the biggest threat of all time. And mental health, sometimes a person is so isolated and very happy in his virtual world that he forgets to make the real connections and actually isn't enjoying the life, right? And then the last one is 15th one, India's $5 trillion economy goal. क्या मतलब है? इंडिया का एम्बिशन है कि हमें इतना ग्रो होना है कि हम अपने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को $5 ट्रिलियन का बना दें। आपको क्या जानना चाहिए? आपको जानना चाहिए करंट स्टेटस क्या है, अभी हम कितना कर पाए हैं। अगर हम इतना कर पाए हैं तो हमें इतना करने में कितना टाइम लगेगा, किन मेजर्स को लेने की ज़रूरत है, कि ड्राइवर्स में सर्विस सेक्टर्स आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग आएंगी, डिजिटल इकोनॉमी आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड चैलेंजेस विल डेफिनेटली बी देयर। इन चीज़ों के बारे में आप कर सकते हैं यहाँ पे बड़े आराम से बात, राइट? अब इसके अलावा, हाँ, there were so many topics. I gave you the ideas. I told you how to generate ideas, how to think about the broader perspective. If your perspective is broad, it will be very easy to think about the points. Okay, टू बेसिक चीजों के बारे में जरूर सोचो बिकॉज दे हेल्प यू टू एक्सप्लेन. बट इफ यू हैव डेटा एंड स्टैट्स, इट्स गोइंग टू it's going to convince the other person that yes, you have some, you have like your point is very trustworthy, and yes, we can talk about that. So apart from communication and your body language, and if you talk about like what kind of gesture you should show, what should be your hand movement, then keep it natural, be nice, always respect the others ideas as well, present your ideas very clearly. It's not important that your English has to be very perfect, your pronunciation, your accent, they should be perfect. And no, actually here these things are not, they are checked, definitely that there are marks for them. If you are a good speaker, definitely it is an upper hand for you. But believe me, if you are able to show your knowledge, you are able to convince, then yes, you will be given good marks. Okay, and I hope you can ace this and you can get, you can crack this round very easily. So I wish you all the best. And I believe अगर यहाँ तक आ गए हो तो अब वापस क्यों जाना, अब जितना जोर है उतना लगा दीजिए, बिकॉज आप यहाँ सिर्फ यहाँ आने के लिए नहीं आए हो, बहुत सारे सपने, बहुत सारी मेहनत करके आए हो। तो उन सपनों को पाने के लिए थोड़ी सी छलांग और लगानी है, पूरी मेहनत से अपनी छलांग को लगाइए, किसी भी चीज़ को अपने आप को रोकने मत दीजिए, एंड एकदम कूल काम इजी माइंड के साथ पढ़ाई करो। न्यूज़ का ख्याल रखो, कोई भी करंट अफेयर्स है प्लीज़ मिस मत करिए, एंड अपने आप को चेक करके देखो, लाइक अज्यूम करो कि आप एक ग्रुप में बैठे हो, ट्राई टू टॉक, आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा घर में अगर पॉसिबल हो, अगर दोस्तों के साथ पॉसिबल हो, तो एक मॉक
इंटरव्यू अपना करके देख लो, किसी भी टॉपिक के ऊपर एक डिस्कशन करके देख लो। एंड ऑल्सो ट्राई टू चेक योर टेम्परामेंट। अगर आपको लगता है कि बात करते समय आप किसी के भी पॉइंट पे बहुत जल्दी जवाब दे देते हो, आप बहुत जल्दी बुरा मान जाते हो, आप बहुत जल्दी उल्टा सीधा बोल देते हो, तो प्लीज stop yourself from doing such things, because this is the test of your behavior there, right? They took two examination to check your knowledge, and this is last time they are checking your knowledge. But more than the knowledge, this is the behavior, right? So how you work in a team, how you actually show your collaboration skills, your team managing skills, this is the test of that quality. So I wish you all the best. Take care, everyone.